This MCQ is from ray optics. Light travels a distance x in time t1 in air and 10 times of x in time t2 in another denser medium. What is the critical angle for this medium? Option 1, sine inverse of 10 t2 divided by t1. Option 2, sine inverse of t1 divided by 10 t2. Option 3, sine inverse of 10 t1 divided by t2. And option 4, sine inverse of t2 divided by t1. स्टूडेंट्स, क्रिटिकल एंगल IC का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स ऑफ म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू डी. यस, क्रिटिकल एंगल IC इज गिवन बाय द फॉर्मूला साइन इनवर्स ऑफ म्यू आर डिवाइड बाय म्यू डी. म्यू आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ rarer medium, sir, म्यू डी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ denser medium. Now what we can consider is the ratio mu r divided by mu d. स्टूडेंट्स, वी नो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट में जो रिलेशन है वो इन्वर्स है. सो स्पीड के फॉर्म में यही होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन rarer मीडियम. ओके, नाउ व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला टू डिटरमाइन स्पीड? इट इज डिस्टेंस ओवर टाइम. सो वी इन डेंसर मीडियम क्या होगा स्टूडेंट्स? डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन डेंसर मीडियम डिवाइडेड बाय टाइम फॉर डेंसर मीडियम डिवाइडेड बाय v in rarer medium, speed in rarer medium, distance traveled in rarer medium divided by time given for rarer medium. Obviously students, is that fine with you? Now you tell me, as per the data, what is the value of xd? denser medium में light ने कितना distance travel किया? 10x. okay, divided by how much is the required time, sir? t2. so 10x divided by t2. the whole should be divided by xr, that is distance traveled by light in rarer medium. कितना है स्टूडेंट्स? ये x डिवाइडेड बाय टाइम जो गिवन है rarer medium का यानी कि एयर का, वो है स्टूडेंट्स t1. करेक्ट है. सो x विल कैंसल आउट. आपको मिलना है ये 10 t1 ट्रांसफर्स इन द न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय t2 इन द डिनोमिनेटर स्टूडेंट्स. सो आपको मिलना है म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू डी इज इक्वल्स टू 10 t1 divided by t2. That means critical angle formula for IC, critical angle will become sine inverse of, simplified version sir, 10 t1 divided by t2. So the answer key should be option 3. okay.